So in last lecture we have seen the example of data cube. Okay, now today we'll start with various schemas for multidimensional data model, because as we know data warehouse is a multidimensional, right? Data cube is a part of data warehouse that is also multidimensional. Here also you can see. Usually in relational databases we store data in only two dimensions. Now in data warehouse we are going to store data in multiple dimensions. So what are various schemas used for multidimensional data models that we will see here. Okay, so here is the first point given is entity relationship data model, that is relational data model. So this entity relationship data model is commonly used in design of relational database, right? Where a database schema consists of set of entities and relationship between them that we already know. Such data model is appropriate for online transaction processing. Okay, जो डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए RDBMS is suitable. Okay, so ये देखा था हमने, it is suitable for OLTP. But in data warehouse we require some concise subject oriented schema which will facilitate online data analysis. So we need data warehouses for OLAP purpose. We use data warehouses for online analytical processing. So for that we need to use some different data schema or data models. So here the most popular data model for data warehouse is multidimensional model, and in multidimensional model the most commonly used data models are star schema, snowflake schema, and fact constellation schema. This third one is also called as galaxy schema. Okay, now we will see them one by one. So सबसे पहला है star schema. This star schema is simplest and most commonly used data warehouse schema. So basically in every schema there are two important concepts. We have seen them in cube data cube as well. We have facts and dimensions. Okay, so in this schema we will have fact table and dimension table. So what is fact table? Fact table will contain quantitative data for analysis such as sales, revenue, quantities, and it will include foreign keys referencing dimension tables. Okay, and what is dimension tables? It will contain descriptive attributes related to facts such as time, product, customer, geography, etc. This dimension table is connected directly to the fact table. Okay, now we'll see example, then it will be clear. Okay, so this is the example of star schema. Okay, star schema of some electronics shop. This is the schema of sales. Okay, all electronics sales. So this table you can see here is the sales table, is fact table. Okay, and all these dimension tables are directly connected with the fact table. Okay, so you can see here sales are sales are considered according to or along with the four dimension. Which are those four dimensions? First is time, second is item, then branch and location. Okay, so here sales data is represented along with four different dimensions: time, item, branch and location. Okay, so this schema contains this central fact table for sales that contain keys of each four dimensions. So you can see here this sales fact table is storing keys of all these four dimensions. So here is the time key,
item key, branch key, and location. Along with these keys, it stores two measures, dollar sold and unit sold. Okay, so in this, time key and item key are system generated identifiers, and this fact table will store keys of all the dimensions it is represented along with, right? So you can notice that in star schema, each dimension is represented by only one table. Okay, now just focus on features of this star schema, how star schema is represented. So you can see here, each schema, sorry, each dimension is represented using only one table. जैसे टाइम है तो एक टेबल में पूरे टाइम का डेटा है, जैसे टाइम की, डे ऑफ द वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर. उसके बाद है सेल्स में जो आइटम्स होते हैं उनका डेटा. अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वन सेपरेट टेबल, आइटम की, आइटम नेम, ब्रांड टाइप, सप्लायर टाइप. Like that we have branch and location. So each dimension is represented by only one table, and each table will contain a set of attributes. ठीक है, जैसे लोकेशन के टेबल में है लोकेशन की, स्ट्रीट, सिटी, प्रोविंस और सेट और कंट्री. Now here if you observe this location table, suppose let's say we have two cities, Pune and let's say Wardha. Both the cities are from Maharashtra, right? And in India. So information stored in location may have redundancy. जैसे कैसे हो सकते हैं वो records? वर्धा, महाराष्ट्र, India, right? Same like that, city Pune, महाराष्ट्र, India. So ये जो है महाराष्ट्र and India, this is redundancy exist in the table. So entries in this location table will create some redundancy among attributes. So to resolve this, we have the next schema, that is snowflake schema. Star schema समझ में आया? There will be one fact table and multiple dimension table. Fact table will store keys of all its dimensions. Okay, and for every dimension there will be a separate table, and in each dimension table it will store its own attributes. Any doubt in star schema? No, ma'am. No, ma'am. Now we have seen one disadvantage कि star schema में redundancy भी हो सकती है, because for every dimension there is only one table. Now in next schema we'll see how to overcome that drawback of star schema. So the next schema is snowflake schema. Okay, so snowflake schema is also one of the variant of star schema. Star schema के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे some dimension tables are normalized. Normalized means they are broken down into sub dimensions. To reduce redundancy in snowflake schema, dimensions are broken down into sub dimensions. Okay, so it will split your one dimension table into some additional table, which will result in schema graph to shape similar to snowflake. Okay, so इसका जो fact table है वो होगा same as star schema. It will be same as star schema, but जो dimension table होंगे वो होंगे normalized. Okay, they will be splitted. So here you can see, ये जो location का table था उसमें redundancy था, right? Snowflake star schema में location के table में redundancy था, तो we have divided or we have splitted this location table into two tables, right? Yes, ma'am. Yes. So such table is easy to maintain, redundancy कम हो जाता है.
स्पेस सेविंग इतना भी नहीं है, लेकिन when we store data in normalized way, it is always better to refer. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, लोकेशन की है, स्ट्रीट की है और सिटी है, सिटी की है इसमें स्टोर किया है, एंड देन वी आर इन डिटेल वी आर गिविंग इन दिस सिटी, सिटी की, सिटी, प्रोविंस और स्टेट और कंट्री। मींस अगर हमारे पास अभी दो सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं वर्धा और पुणे का, तो क्या होगा, ये जो डायमेंशन टेबल है लोकेशन का, इसमें सिर्फ लोकेशन का की होगा, स्ट्रीट होगा और सिटी का की होगा। ठीक है, और ये सिटी के की में कौन कौन से होंगे, सिटी का जो डायमेंशन टेबल है इसमें उस पर्टिकुलर सिटी का स्टेट और कंट्री होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास पुणे पुणे लोकेशन के मल्टीपल भी रिकॉर्ड्स है, तो भी ये जो लोकेशन का टेबल है इसमें रिडंडेंसी नहीं होगा, बिकॉज वी आर स्टोरिंग की, वी हैव नॉर्मलाइज दिस, जैसे हम आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइज करते हैं वैसे ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया है। आया समझ में? Yes, ma'am. वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आइटम टेबल को भी हमने Ma'am. स्प्लिट किया है, सप्लायर की और सप्लायर टाइप, ये हमने सप्लायर के टेबल में स्प्लिट किया, यहाँ पे भी रिडंडेंसी हो रहा था। ठीक है, so this is called as snowflake schema, so it is the another, you can say, version of star schema, but it is normalized. Okay, फैक्ट टेबल तो सेम है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फैक्ट टेबल इज एज इट इज, ओनली डायमेंशन टेबल में अगर रिडंडेंसी है तो हम नॉर्मलाइज करके उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, दिस इज the second schema, second type of schema. And then third type of schema is fact constellation. This is also called as galaxy schema. Now what is galaxy schema? Galaxy schema is a complex schema that contains multiple fact table. अभी ऊपर जो हमने दो देखे थे schema के types, उसमें हमारे पास कितने fact tables थे, fact के table कितने थे? Ma'am. One. Only one fact table was there, and that fact table was directly connected with dimensions table, right? Now some applications may require multiple fact tables, तो यहाँ पे fact constellation में हमारे पास there can be one or multiple fact tables, और another component है इसका shared dimension table। ठीक है, तो जो भी dimension के table होंगे वो fact table के बीच में shared भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी example see here we have two facts table. First is this sales, and it is same as the previous example. One more fact table we have, that is shipping. So this schema specifies two fact tables, sales and shipping. The sales table definition is exactly same as that of star schema. Shipping table has 5 dimensions or 5 keys it is storing: item key, time key, shipper key, from location and to location. Okay, and again it have two measures: dollar cost and units shipped. और अगर आप इसके डायमेंशंस के टेबल देखोगे तो दे आर शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट टेबल। ठीक है, शेयर्ड है, बता सकते हो आप कौन सा टेबल शेयर्ड है कौन से फैक्ट्स के बीच में? Yes, which tables are shared here, which dimension tables are shared between sales and shipping? Location or super. Location, yes, location is connected with sales as well as shipping, so it is shared. Or Ma'am. Time dimension table. वो sorry, shipping table के साथ time dimension table मैम
right, this time dimension table is shared with sales and shipping. आइटम भी शेयर्ड है, राइट, सेल्स और शिपिंग के साथ, और लोकेशन भी शेयर्ड है. Yes, गॉट ma'am. इट. हाँ, वैसे अगर आप ब्रांच देखोगे तो ब्रांच इज नॉट शेयर्ड. So some dimension tables may be shared, some dimension table may not be shared. This is fact constellation. Got it? Okay, ma'am. Yes, yes, ma'am. Which three schemas we have seen? Star schema, snowflake schema, and fact constellation schema. Okay. Okay, now we'll try to understand the next term used in data warehouse, that is concept hierarchy. Okay, so this concept hierarchy in data mining is a structure that organizes data or concepts into multiple levels of abstraction. जो भी डेटा है हमारे पास डेटा वेयर हाउस में, वी आर ट्राइंग टू represent that data in at multiple levels. It is called as concept hierarchy. So it defines a sequence of mapping from set of low level concepts to high level concepts. Again, we'll understand this with one example so you can understand. See, let's consider the concept hierarchy of location. Okay, एक एक डायमेंशन का हम एक एक डेटा वेयर हाउस के एक एक डायमेंशन को हम कॉन्सेप्ट हायरार्की में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर वी विल कंसीडर कॉन्सेप्ट हायरार्की फॉर दिस डायमेंशन लोकेशन. लोकेशन हमारा डायमेंशन है, राइट. एक डेटा वेयर हाउस में वेयर हाउस में जो भी डेटा हमने स्टोर किया है, लोकेशन एक डायमेंशन है, राइट. जैसे टाइम एक डायमेंशन है, लोकेशन एक डायमेंशन है. So for location dimension, we can represent it at various or different levels from low level to high level. So city values will include cities. Okay, these are the cities in US. So you can see all cities are represented at this low level. Now each city can be mapped to state, because in one state there can be multiple cities. Each city can be mapped to the state to which it belongs. जैसे वैंकूवर यहाँ पे मैप किया है ब्रिटिश कोलंबिया के साथ, राइट. शिकागो एंड अर्बना मैप किया है इलिनॉइस के साथ. अगेन दिस प्रोविंसेस और स्टेट कैन बी मैप टू द अपर लेवल लाइक इन विथ कंट्री, राइट. तो ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो मैप किया है कनाडा के साथ. न्यूयॉर्क इलिनॉइस मैप किया है यूएसए के साथ. Okay, and then we have again mapped this country with all. So this mapping from concept hierarchy for the dimension location, mapping a set of low level concepts to higher level concepts. Okay, so we are going from specific to general. ये जो cities है ये क्या हुआ, more specific, to we are going to general, like from cities to states, states to country, countries to all. Got it? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट हायरार्की. मतलब कोई भी डायमेंशन है जो हमारे डेटा वेयर हाउस में है, उसको हम कॉन्सेप्ट हायरार्की में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, ma'am. ओके, नो डाउट इन कॉन्सेप्ट हायरार्की. No, ma'am. So next point we have here is data cube measures. Okay, so we can compute different measures of data cube. So how these measures are computed? For that, first we need to categorize them into
various categories: distributive measures, algebraic measures, and holistic measures. Okay, now what are distributive measures? Di- uh, Distributive measures means if you have some dimension, if you are considering some dimension, and on that dimension if you are able to apply some aggregate function like count, sum, mean, max. So if the result derived by applying function to n aggregate values is same as that derived by applying function on all data without partitioning. Okay, let me explain this. Okay, with this data cube we will try to understand. Just a second. जैसे अगर हमारे पास ये सैंपल डेटा क्यूब है, ठीक है, एंड लेट्स से this every cell here is representing every cell is representing some value which is sales value. How many units in that particular quarter has sold for this particular item. जैसे यहाँ पे 200 है, तो इन फर्स्ट क्वार्टर टीवी का सेल कितना हुआ था? 200 यूनिट्स. ओके, जैसे सेकंड क्वार्टर में लेट से 300, इसमें लेट से 150 और इसमें है 300. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर का मतलब क्या है कि इफ यू आर इंडिविजुअली, इफ यू कैन अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन. यहाँ पे और एक है हमारे पास कॉलम, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सम, राइट. तो अगर आपने ये सारे वैल्यूज का एवरेज निकाला, ठीक है, ऐसे कंसिडर करो कि ये सारे ही सेल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इन सारे वैल्यूज का आपने एवरेज निकाला और सम में भी कुछ वैल्यूज होंगे, जैसे इनकी सम होगी 300 प्लस 300 लेस 600 800 950. ओके, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी. तो अगर आपने ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है इनका एवरेज निकाला एंड देन यू calculated average of these sums, if they are equal, then we call that measure as distributive measure. आया समझ में? क्या है यहाँ पे? if result derived by applying function to n aggregate values is same as that derived by applying function on all the data without partitioning. So without partitioning मतलब इंडिविजुअल डेटा हमने कंसिडर किया और उस पे अगर हमने एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया, वो और एग्रीगेट फंक्शन अप्लाइड और फंक्शन अप्लाइड ऑन एग्रीगेट डेटा, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो सच मेजर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर. ठीक है, तो दिस काउंट, सम, मीन, मैक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर. मतलब अगर काउंट हम इंडिविजुअल वैल्यू पे लगाए, अगेन यू कैन कंसिडर दिस. यहाँ पे टोटल काउंट है, अगर हमने ये काउंट फंक्शन इंडिविजुअल वैल्यूज पे लगाया या फिर ये सेम काउंट फंक्शन हमने एग्रीगेट पे लगाया, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम. ओके, तो सिमिलरली it is applicable for sum function, it is applicable for mean and max. So such type of functions, such type of measures are called as distributive measures. अगर एक क्यूब को हमने सब क्यूब्स में डिवाइड किया और उन सब क्यूब के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया एंड देन वी अप्लाई सेम फंक्शन ऑन एंटायर क्यूब, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो अगर सेम है देन फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीगेट फंक्शन. तो ये सम, काउंट, ये जो एग्जांपल दिए यहाँ पे, ये सब कौन से टाइप के हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एग्रीगेट फंक्शन. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next we have algebraic function. So here an aggregate function is algebraic function if it can be computed by algebraic function with m arguments, each of which is obtained by applying a distributive aggregate function. जैसे for example algebraic function का example है average.
एवरेज, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे एग्जांपल्स हैं अलजेब्राइक फंक्शन के। मतलब अगर आपको n वैल्यूज दी, उसमें से आपने मिनिमम वैल्यू निकाली और या फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ये जो एवरेज, मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये जो फंक्शन है ये है अलजेब्राइक फंक्शन। तो सेम Okay, कॉन्सेप्ट है ma'am. डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा। सॉरी, एनी डाउट? No, ma'am. So this algebra, if it can be computed by an algebraic function with m arguments, where m is a bounded integer, each of which is obtained by applying distributive aggregate function. It's called as what? Distributive, algebraic measure. ठीक है, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव का देखा जिसमें क्या था, काउंट, सम, मीन, मैक्स, वैसे ही अगर हम इंडिविजुअल वैल्यूज पे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं या फिर पूरे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे सेम फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी सेम, बट हियर फंक्शन इज डिफरेंट। these functions are algebraic functions, so they are called as algebraic measure. Okay, and then third category of data cube measure is holistic. So there is no constant bound for दिस होलिस्टिक मेजर। जैसे मीडियन है, मोड है, रैंक है, इनको एक कांस्टेंट मेजर नहीं होता है। सो फॉर दिस देयर इज नो व्हाट आई कैन से, डज नॉट एग्जिस्ट अलजेब्रिक फंक्शन विथ m आर्गुमेंट्स। इसकी जो वैल्यू होती है उसका कुछ कांस्टेंट बाउंड नहीं होता है ऑन द स्टोरेज साइड नीडेड टू डिस्क्राइब द सब एग्रीगेट। So common example of holistic function include median, mode and rank. Got it? So the measure is holistic if it is obtained by applying holistic aggregate function. The function is the measure is algebraic if it is obtained by applying algebraic aggregate function, and the function or a measure is distributive if it is obtained by applying some distributive measure. Okay, so जो डेटा क्यूब के मेजर्स होते हैं उनको हम इस तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Any doubt in data cube measures? No, ma'am. No doubt. Okay, now next we will see typical OLAP operation. So on ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में डेटा वेयर हाउस के डेटा के ऊपर जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं दैट विल सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो RDBMS होता है हमारे पास, we only use select operation to fetch the data from RDBMS, राइट? वैसे ही डेटा वेयर हाउस में अगर हमें डेटा फेच करना है तो वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस। सो दीज आर द टिपिकल operations perform on data warehouse, they are called as OLAP operation. Okay, तो सबसे पहला है roll up, it is also called as drill up, which summarizes the data. So as its name suggests, roll up means by climbing up hierarchy
जो हमने कॉन्सेप्ट हायरार्की देखा है उसमें क्लाइंब अप करके जो भी समरी निकालते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज रोल अप. सो बाय क्लाइंबिंग अप हायरार्की और बाय डायमेंशन रिडक्शन हम ये रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. इज दिस डायग्राम विजिबल टू यू? यहाँ पे जो है ये रोल अप ऑपरेशन Yes, ma'am. दिखाया है. ठीक है, सो दिस इज अवर डेटा क्यूब एंड ऑन दिस डेटा क्यूब वी आर अप्लाइंग रोल अप ऑपरेशन. तो रोल अप ऑपरेशन के बाद हमें क्या मिला है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव इन दिस डेटा क्यूब वी हैव वैल्यूज फॉर डिफरेंट सिटीज. ठीक है, जब हमने रोल अप किया तो हमें क्या मिला है? we have summarized the data according to country. तो in this cube we have sales of Canada and USA. ठीक है, इसके बाद और भी हम रोल अप करेंगे तो हमें पूरा डेटा मिलेगा ओवरऑल ऑफ ऑल कंट्रीज. गेटिंग इट? रोल अप मीन्स क्लाइंबिंग अप इन द कॉन्सेप्ट हायरार्की. जो हमने कॉन्सेप्ट हायरार्की देखा उसमें क्या था? नीचे सिटीज थे, उसके ऊपर स्टेट थे, उसके ऊपर कंट्रीज थे. तो यहाँ पे ये रोल अप ऑपरेशन है, रोल अप ऑन लोकेशन फ्रॉम सिटीज टू कंट्रीज. ठीक है, Okay, ma'am. हाँ, तो जब हम रोल अप करेंगे तो क्या होगा? एक या ज्यादा डायमेंशन हमारे जो डेटा क्यूब में से रिमूव हो सकते हैं. राइट, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिटी था, वो सिटी में कितने थे? 4 थे. राइट, लेकिन अभी अगर 2 सिटी बिलोंग करती है एक कंट्री से और रिमेनिंग 2 बिलोंग टू अनदर कंट्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. अगर यहाँ पे 4 थे, 4 सिटीज के 4 थे, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास 2 ही डायमेंशन बचे अभी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रोल अप ऑपरेशन. देन we have completed roll up. Now second is drill down, or it is also called as roll down. तो इसमें क्या है? दिस इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ रोल अप. रोल अप में हमने क्या किया था? फ्रॉम सिटी टू कंट्री वी हैव रोल्ड अप. तो उसमें क्या हुआ था? डायमेंशनलिटी रिडक्शन हुआ था, डायमेंशन हमारे रिड्यूस हो गए थे. नाउ हम एग्जैक्टली उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फ्रॉम हायर लेवल समरी टू लोअर लेवल समरी. मतलब अगर हमारे पास कंट्री का डेटा है तो उससे हम सिटी पे आएंगे, अगर स्टेट पे आएंगे, स्टेट का डेटा है तो उससे सिटी पे आएंगे. सो फ्रॉम हायर लेवल समरी टू लोअर लेवल समरी और डिटेल डेटा वी शो by introducing some new dimensions. ठीक है, तो again you can see in this diagram drill down is given here. ठीक है, तो यहाँ पे हमने drill down कौन से डायमेंशन पे किया है? टाइम के डायमेंशन पे. ठीक है, तो टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था हमने क्वार्टर में. यहाँ पे हमने ड्रिल डाउन करके टाइम किस में रिप्रेजेंट किया है? इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक ईयर में हमारे पास सिर्फ 4 ही क्वार्टर्स थे, तो 4 डायमेंशंस थे. 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया 12 डायमेंशंस में. दिस इज कॉल्ड एज ड्रिल डाउन. गॉट इट? Yes, ma'am. हाँ, तो आप यहाँ पे देखो, एक फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास वैल्यू थी Yes, 400. ma'am. वही हमने मंथ वाइज रिप्रेजेंट की. इसकी भी टोटल 400 ही होती है, लेकिन जब हम यहाँ से मंथ से ऊपर जाएंगे कॉल्ड एज रोल अप, और जब हम क्वार्टर से मंथ के ऊपर आएंगे इट इज कॉल्ड एज ड्रिल डाउन और रोल डाउन. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्लाइस एंड डाइस. Slice and dice is also called as project and select. So the slice operation performs a selection on one dimension of given cube, which will result in a subcube. Okay, so again we'll go to this diagram. यहाँ पे slice किस पे है? Slice कहाँ पे है? Here the slice is given. What slice will do?
it will project or it will select one dimension of given cube and result in सब क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर टाइम का कुछ क्वार्टर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया. ठीक है, और उसका एक सब क्यूब बनाया. ठीक है, जैसे हमने फॉर टाइम इज इक्वल टू Q1 सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ Q1 का डेटा अकॉर्डिंग टू वेरियस सिटीज हम इस सब क्यूब में दिखा रहे हैं. ठीक है, this operation is called as slice operation where the cells data are selected from a central cube for dimension time using a criteria time is equal to Q1. So this dice operation and okay, ये हो गया slice, right? Now what is name of operation? Slice and dice. Now this dice operation defines a subcube by performing a selection on two or more dimensions. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द डाइस ऑपरेशन. ये हो गया स्लाइस. स्लाइस में क्या होता है? ओनली वन डायमेंशन इज सिलेक्टेड, वेयर एज इन डाइस वी आर सिलेक्टिंग मल्टीपल डायमेंशन. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है लोकेशन इज इक्वल टू टोरंटो और वैनकूवर, टाइम भी दिया है Q1 और Q2 और आइटम भी दिया है होम एंटरटेनमेंट और कंप्यूटर. तो ये जो सेंट्रल क्यूब है इसमें से हमने सब क्यूब बना लिया विथ मल्टीपल डायमेंशन. Multiple conditions we have given here. This will give you dice. From cube it will give you dice and this slice will give you subcube. Okay. Any doubt in slice and dice? क्या difference है slice और dice में? स्लाइस में एक ही डायमेंशन पे काम कर सकते हैं. Right. Slice में हम एक ही dimension देते हैं, वैसे dice में हम multiple dimensions देते हैं. ठीक है. Now next operation is pivot or rotate. So pivot क्या करता है? It will reorient the cube. Here in this example you can see it will rotate the data in axis view to provide a alternative data. ठीक है, तो ये जो सेम है इसके ऊपर हमने pivot ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसका एक्सिस चेंज हो गया. राइट, हमने ये जो सिटीज थे अभी वाई या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिटी शो किए और वर्टिकल एक्सिस में आइटम टाइप शो किए. ठीक है, तो पिवोट क्या करता है? it will show you same data in different representation. तो यहाँ पे जो ये क्यूब था ये जस्ट हमने रोटेट किया है. दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पिवोट और रोटेट. ओके, इसका रोटेट भी नाम है. तो रोटेट से आप समझ सकते हो कि हमने सिर्फ डायमेंशन या एक्सिस उसके चेंज किए. ओके, and we still have some more operations like drill across, drill through. Okay, so drill across involve more than one fact table, drill through the bottom level of queue to its backend relational table using SQL. ये कुछ और operations है जो हम perform कर सकते हैं on data cube for OLAP. Okay, any doubt in this? No, ma'am. समझ में आ गए No, ऑपरेशन ma'am. डेटा क्यूब से डेटा Yes, कैसे ma'am. फेच कर सकते हैं अलग अलग टाइप में. Okay, now next topic is design of data warehouse. Okay, so while designing a data warehouse we have a various frameworks. So first is a business analysis framework. So we have various views of design of data warehouse. First is top down view,
data source view, data warehouse view, and business query view. Okay. ये overall मैं आपको explain कर देती हूँ. Then we'll see them in detail. What is top down view? Top down view allows selection of relevant information necessary for the data warehouse. Then what is data source view? It exposes information that is being captured, stored and managed by operational systems. Then data warehouse view, it will consist of fact tables and dimension table, and business query views, which will see your data house from the perspective of data in the warehouse from end user, from view of end user. These are the, you can say, various perspectives from which data warehouse can be viewed. Okay, so these are the frameworks for डिजाइनिंग अ डेटा वेयर हाउस. मतलब जब भी हमें एक डेटा वेयर हाउस डिजाइन करना है तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसका डिजाइन अलग अलग हो सकता है. जैसे as a data analyst you will view that data warehouse from data warehouse view. अगर कोई एंड यूजर है तो उसका व्यू बिजनेस क्वेरी व्यू हो सकता है. बिकॉज डेटा वेयर हाउस के अलग अलग यूजर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव दिस डिफरेंट व्यूज to look at that data warehouse. Getting it? Yes, ma'am. Because data warehouse यूज करना ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. So from different perspective we will have various views so that it will be easy to use to various kind of users. So this is about design of data warehouse. So I think we'll stop for today. We will continue in the next lecture. Just wait for a minute. Let me have a screenshot. After that you can do. Okay, thank you.